Right. So welcome again. Thank you for joining today. As today we'll be talking on pain management dosage. काफी सारी queries हमें doctors की आई regarding the pain management regarding the dosage. So today we just thought to have a discussion around that. We are just starting in a minute now, and as all the doctors have like joined us today, so it will be a discussion, a brief presentation about the pain mechanism, how cannabis is working in pain cases. So we will be just sharing some research, some data available, and I request all of you. Right. So to welcome again. Thank you for just joining today. just a second. As today we'll be talking on. Right. So let's start now. And I was like, we were mentioning that today we want to have all of you bit interactive. So all of you can send your questions, queries as the discussion will move on, as our talk will move on. And I have with me Mr. Vikram Singh, founder Ananta Hempworks as well. And again, we are thankful to Ananta Hempworks for ensuring these kind of trainings and sessions to give some bit. Right. So let's start now. And I was like, we were mentioning that today we want to have all of you bit interactive. So all of you can send your questions, queries as the discussion will move on, as our talk will move on. I request Vikram to please have on mute. Thank you. Right. So let's first start. Hope you are able to see the presentation. So let's first start the discussion. And as I welcome Mr. Vikram B. Singh as well along with me in this session. So first we'll be taking. Thank you, Dr. Yeah. Hi, Vikram. Good. Yeah. So first we'll be taking on some technical discussions, and then we'll be correlating that to the medicines available in medical cannabis space. Today we are referring Ananta Hempwork, so we can quote some examples. I know there are some questions and queries regarding the dosage and the pain management aspect as well. So let me quickly discuss that first, and then maybe we can take it forward. Right. And hope we are able to connect with all of you. I can see we have started live on YouTube as well, and several doctors are there. And also on Zoom, we have several doctors. More than 200 have joined now on YouTube as well. Thank you again for this kind of support. Great. So let's start. So see, first of all, we need to understand as far as in Ayurveda, there are so many medicines available for pain management. हम सबको पता है कि पेन के लिए काफी सारी medicines हैं. Chronic pain के लिए पंचकर्मा है, अग्निकर्मा है, हमारे पास instant solutions, मर्म चिकित्सा है. We have so many options in Ayurveda. However, still sometimes if somebody is coming in acute pain and किसी एक टेबलेट या कैप्सूल या कोई और एक मेडिसिन ड्रॉप्स फॉर्म में लाइक टिंचर्स आर देयर, ऐसा कुछ कि इमीडिएटली उनको रिलीफ मिले एज कंपेयर टू अदर पैथीज. And we don't want to by the way criticize or say negative about any pathy, but there are limitations and there are side effects as well. So on that note, we need that kind of solution where side effects are not there, acute pain or chronic pain also. And by the way, several kinds of pains, like it can be related to arthritis, muscle tissue damage, neuropathic, fibromyalgia. Many categories of pains are there. So is there any solution which easily and in acute cases can give us immediate results without much side effects which other chemical solutions are having? And it is also effective in long term duration also in chronic pain and chronic cases as well. So क्या ऐसा कुछ है? And in that we get a solution in the form of cannabis. In fact,
आज का सेशन हम थोड़ा शॉर्ट क्रिस्प रखेंगे. कैन बी द फर्स्ट सेशन. आई विल रिक्वेस्ट लेट्स हैव अनदर सेशन ऑन पेन मैनेजमेंट इन नेक्स्ट वीक और मे बी लेटर ऑन एज वेल, बिकॉज ये काफी डिटेल्ड डिस्कशन है. इनफैक्ट वी कैन हैव ईच सेशन ऑन ईच काइंड ऑफ पेन. लाइक न्यूरोपैथिक पेन का वी कैन हैव वन सेशन. Arthritis, various type of arthritis are there. Then musculoskeletal pains, tissues, injuries are there. Fibromyalgia, headache, migraine, menstrual cycle pains, cramps. So many aspects are there. So we can have detailed discussion for each kind of pain in future as well. But today we just thought to at least touch upon the basic aspects of pain management and how cannabis is effective and giving relief. We will not be talking much about Ayurveda. I think Ayurveda का सबको आपको पता है इसके बारे में. हम थोड़ा सा इसकी जो रिसर्च है, जो एंडोक्रिनोइड सिस्टम है, उसके बारे में आज थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे. एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम एनिमल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल रिसर्च पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं डॉक्टर्स के, तो वो आज थोड़ा सा समझते हैं. एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डोसेज, कि कितना डोसेज दें, कैसे पेन को हम पेशेंट्स को मैनेज करें. सो ऑल दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज डिस्कशन. So endocannabinoid receptors are the basic thing which we need to understand. इस टाइप का कुछ 3D स्ट्रक्चर दिखेगा अगर हम CB1 CB2 रिसेप्टर्स की बात करें. हमारी बॉडी के अंदर we have so many kind of endocannabinoid receptors. This already we have discussed in the last session. anandamide 2AG के बारे में हमने बात करी थी. इस टाइप से थोड़ा स्ट्रक्चर रहता है. एंड because these are very important, these play a very important role in pain management. So वो थोड़ा सा हमें इसके बारे में समझना है. So CB1, CB2 रिसेप्टर्स हैं मेन. CB1 की अगर हम बात करें तो ब्रेन, एडिपोज टिश्यू, मसल, लीवर एंड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है. स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, इधर CB2 रिसेप्टर ज्यादा मिलता है. एंड CB1 एंड CB2 रिसेप्टर्स आर बेसिकली present and they are getting activated by the cannabinoids. जो प्लांट cannabinoids हैं जिसमें CBD, THC, जो पेन में अगर हम बात करें तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो वहां पर दे एक्टिवेट विद दीज रिसेप्टर्स एंड दे ensure that after activation certain kind of neurotransmitters are being released. And pain management का डबल impact है, डबल like role play करता है cannabis. जैसे generally we understand that in specifically in Ayurveda there are so many medicines which heal the cause of pain. वहां पर तो Ayurveda is very effective and we have sometimes seen that healing of the cause of pain has been done after some weeks or some months of treatment of Ayurveda medicines or पंचकर्मा. बट उससे पहले एक सप्रेशन ऑफ पेन का एक्शन है जो जनरली कई बार एलोपैथिक कुछ मेडिसिन से हमें बहुत अच्छा और इफेक्टिव मिलता है. सो समटाइम्स आई हैव सीन सम डॉक्टर्स आर गिविंग इन एक्यूट इनिशियल केसेस some allopathic medicines for pain management and then they are also simultaneously giving Ayurveda to get the permanent healing. But with cannabis we can do that acute management या pain suppression वाला जो एक्शन है कि immediately patient को within few hours या sometimes within few minutes पेन में आराम मिले एंड एटलीस्ट उसका पेन सप्रेस हो, या पेन है बट उसको फीलिंग नहीं है पेन की, वो वाला एक्शन हमें कैनबिस से बहुत अच्छे से मिलता है. बिकॉज डायरेक्टली इट इज एक्टिंग ऑन लोकल साइट्स आल्सो समटाइम्स. एंड देन ग्रेजुअली विद आयुर्वेदा ट्रीटमेंट वी कंटिन्यू एंड गिव द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर द रूट कॉज ऑफ द पेन. सो पेन में हमें दोबारा से समझना है. I think we don't want to go into the detail of the pathology or the physiology level of discussions today, but pain is an indication sometimes of the reason which is there. It can be some injury, it can be some infection, it can be some other pathology as well. So pain in an indication, it's an indication to some reason or some pathology which is related in our body. So when we reach that pathology, when we reach that reason during our clinical diagnosis, then only we can correlate that. And but for the time being sometimes we need few days also to reach to the final conclusion that where is the pain, like what exactly the reason of the pain is. So I think in that aspect we should focus and we should construct our treatment कि वहां पर आयुर्वेदा साथ में रहे बट एटलीस्ट सम एक्यूट पेन रिलीफ उनको मिले हमारे ही क्लिनिक से, हमारे ही सेंटर से, with Ayurveda only, with under the Ayurveda medicine bracket, not going to any other pathy. So वहां पर cannabis is playing a very important role. And अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स की आगे हम बात करेंगे, कुछ मेडिसिन which we are using
right now from particularly this company, that is Ananta Hemp. So VJ75 capsule is doing very well. Recently we have started, and we all know about the Loki Vijayavati, which we can do for morning dosage or for chronic long-term duration after like addressing the acute pain through VJ75. So अभी कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो एंड टिंचर्स का भी थोड़ा सा डोसेज आज हम समझेंगे. मैकेनिज्म बेसिक यही है कि एंडोकैनाबिनॉइड्स बेसिकली व्हेनेवर देयर इज लाइक some kind of inflammation, tissue injury, we are in stress, so all these can lead to the release of endocannabinoids. And what the release of endocannabinoids does in our body, that they decrease the cytokines and they effect on the brain as well to improve mood, reduce anxiety, they also decrease the T cell migration. So all these aspects are being there when there is a release of endocannabinoids, that we need to understand, and that is the physiological effect of endocannabinoids. And there are some examples which we can understand, and that is the basic mechanism, very very basic mechanism of cannabis, when and the plant cannabinoids, that is CBD, THC, and many other are there. And what exactly the endocannabinoid receptors does to the like our body, so when we need to understand that as well. So neurological effects of endocannabinoids are like via CB1. We need to understand that, again as I said initially, एक important aspect है जो हमें समझना है पेन मैनेजमेंट में, कि एक पेन का परसेप्शन है और एक पेन का रीजन. आई रिपीट, एक पेन का परसेप्शन है और एक पेन का रीजन है. तो अभी तक काफी सारी आयुर्वेदा मेडिसिन से पेन के रीजंस को तो हम हील कर पाते हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट से भी पेन के परसेप्शन को, मर्म चिकित्सा से, अग्निकर्म से हम पेन के परसेप्शन को भी कई बार थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर पाते हैं. बट बार बार एक बड़ा क्लिनिकल लेवल पर चैलेंज है, प्रैक्टिकल चैलेंज है कि ठीक है, दोज हु आर स्पेशलिस्ट इन मर्म, बट कितने हैं पूरे इंडिया में? दोज हु आर स्पेशलिस्ट इन अग्निकर्मा या पंचकर्मा, कितने के पास सेटअप्स हैं पूरे के पूरे एक ओपीडी क्लिनिक लेवल पर? वो एक चैलेंज हमें समझना है. वहां पर वी नीड दीज काइंड ऑफ मेडिसिन लाइक कैनबिस, which helps us in controlling the pain perception for the time being, till the entire ayurveda will help them in other issues and in other reasons. पहला मैंने बताया, पहले दिन कोई पेशेंट एकदम क्लिनिक पे आया, so immediately we need something to check the pain perception. And with cannabis now, with good quality medicines of cannabis now, that can be very easy, just like we are doing with all other pathies. Again, I don't want to name again and again any particular pathy or any particular medicine, but we all know that for pain perception what we are doing right now, right? वहां पर we have very good results with cannabis. In fact, opioid analgesics तक को fight करा है यूएस में, जो 40% opioid addiction decrease हुआ after cannabis people have started. So वो सारे aspects को we need to understand, and that is अभी हम देखेंगे उसका आगे. We will be seeing the animal studies and the like human clinical trial results as well. So effect on pain perception is very very important, which we need to understand here. देन एपेटाइट का, मूड का, स्लीप का, मसल कोऑर्डिनेशन, वो सारे एस्पेक्ट्स हैं. अभी आज हम उन सबको इतने डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेन. पेन के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है कि यहाँ पर अगर हम देखें जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है, इफ यू कैन फॉलो द कर्सर, सो पेन परसेप्शन एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देन मसल कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विच इज रिलेटेड टू द मस्कुलर पैथोलॉजीज ऑफ द पेन. देन नॉन न्यूरोलॉजिकल में बोन फॉर्मेशन को मॉड्यूलेट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है, बिकॉज आर्थराइटिस के केसेस में we have seen that with the other ayurveda medicines जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें अगर हमने कैनबिस को ऐड किया तो कैनबिस के दो एस्पेक्ट्स हमें मिलते हैं, और दो रीजंस की वजह से हम उसको ऐड करते हैं. एक, अगेन द पेन परसेप्शन इनिशियली विल बी रिड्यूस्ड, so it will at least give some bracket and some buffer to give us that patient a complete healing. And second is the bone formation modulation is being done. So whatever the other ayurveda medicines which we are giving will be helpful. अगर आप उसको कुछ भी दे रहे हैं, कैल्शियम भी दे रहे हैं, आप उसको गुगलू से चिकित्सा कर रहे हैं, आप पंचकर्मा कर रहे हैं, आप कुछ ऑयल से चिकित्सा कर रहे हैं, आप भस्म कुछ दे रहे हैं उनको, वटेवर रस औषधि से आप चिकित्सा कर रहे हैं, कोई भी आप आयुर्वेदा मेडिसिन से उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां पर अगर इफ यू हैव एडेड कैनबिस, इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स व्हिच वी हैव सीन इन मेनी आर्थराइटिस केसेस एज वेल. Right, so this also is very very important, which we need to understand, and accordingly we need to like plan our treatment. And CB2 also are very much important for our like regulations of the B migration of B cells,
or it also somehow related to suppressing the inflammation. Again, that is a very, very important aspect which we need to understand, specifically when we have pains in our limbs, when we have pain in our lower body. The CBD receptors are present more there, and inflammation suppression is also there as far as the effect related to the immune system is concerned for CB2 receptor. So these some mechanisms and some actions we need to understand when we are studying cannabis will help us in giving the best results as far as the pain management cases are concerned. Now we have around 60, in fact now it's more than 100, it's been researched, but the main are THC, CBD, CBN. These are some main, and in fact, CBD has been proven for a very good analgesic effect, anti-spastic effect is there, and THC somehow also is related to pain management in many aspects. So um, we need to understand, and in India, it's good that we don't need to bother about concentrations and all, because the everything which we are getting is the leaf extract, the full spectrum leaf extract medicines we are getting. So the entire leaf and the entire cannabinoids will be there in all the medicines, वो सब में रहेंगे. अगर हम animal studies की बात करें, so we have so many animal studies like already published, जिसमें like we have seen that न्यूरोपैथिक लेवल पर देर आर इंजरीज, वहां पर काफी सारी स्टडीज हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी से लेकर नर्व इंजरीज के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड नर्व इंजरी है. So all these studies are there where we have seen that cannabinoids have suppressed, cannabinoids have given the best results in terms of neuropathic pains are concerned. That we have seen in the many studies. Right. And then in other models we have seen that as far as the human studies are concerned, so neuropathic pain, non-cancerous pain, fibromyalgia, rheumatoid arthritis, mixed chronic pains, so many articles and many clinical trials have been studied, and it has been seen that analgesic effect, significant analgesic effect was there. There was no serious adverse effect, and uh, cannabinoids are safe and effective. So in many studies across the world, people have seen that cannabinoids, the cannabis medicines, are safe, are very much effective in terms of managing the pain, in terms of giving good results as far as pain management is concerned. So why we are talking all this and when we are showing all of you is to give you a relief, to give you a sense that yes, it's working. बाकी सब कुछ available है public domain पे, आप जाके search कर सकते हैं. You can see so many reference, so many studies, so many research articles are there. कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, like if patients are already on antidepressant, regular intake of alcohol, एंटीहिस्टामाइंस ज्यादा चल रही हैं, स्लीपिंग पिल्स या एंटी एंग्जाइटी पिल्स वो ले रहे हैं, सीजर की मेडिकेशंस हैं, ओपियोइड पेन मेडिकेशंस हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है व्हेन वी आर गिविंग, बिकॉज इट कैन इंक्रीज द सिडेटिंग इफेक्ट. सो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. एज सच कोई बहुत ज्यादा सीरियस इशू नहीं होगा कैनाबिस से. मैं ये स्लाइड आई थिंक या सो बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो ओवरडोज डेथ रिस्क फॉर विद कैनाबिस. काफी डॉक्टर्स ने पूछा, काफी डॉक्टर्स ने ये इसके बारे में कंफ्यूजन किया. सो आई जस्ट थॉट टू हैव दिस पर्टिकुलर स्लाइड टुडे दैट इट्स नो लाइक आप पूरा मतलब इट्स नॉट कि आपको बहुत ज्यादा किसी को ओवरडोज करना है, बट रिस्क नहीं है अगर कोई ज्यादा डोज भी ले लेता है. इट्स वेल टॉलरेटेड. कॉन्स्टिपेशन माइल्ड थोड़ा बहुत कुछ कुछ केसेस में हमने देखा है, बट अदरवाइज नहीं है इतना इशू. रेस्पिरेटरी सप्रेशन नहीं होता है इससे, एंड इट रिलीव्स द पेन इमीडिएट. मतलब आई कैन से दैट इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस वी आर सीइंग दैट so many patients are giving us this feedback, the first time in their life they have this kind of relief. They were not having relief with all the chemical solutions, all the pathies they have tried. Sometimes they have tried several options in Ayurveda also, but then we started, and when we have given them cannabis, the relief in the pain was best in their life. That feedback some patients have given us. Sleep, definitely it improves. Then decrease in the need of opioids or any other analgesics in several cases, and also it's working synergistically as well sometimes.
So on one slide maybe you can ask कि आपने तो पहले मना किया था, मैंने मना नहीं करा यहाँ पे ओपियाइड पेन मेडिकेशन के साथ आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं. इनफैक्ट इट्स नॉट कि आपको इन मेडिसिन के साथ नहीं देना है. लेट मी again clarify to all of you. So it's not कि you have not you are not supposed to give ऐसा नहीं है, आप दे सकते हैं, but you have to either maintain a particular gap, time gap. Otherwise you can inform patient कि थोड़ा सा नींद ज्यादा आएगा, थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोने का आपको लाइक रहेगा, या you can have some gap as well. So that we need to understand, otherwise it's pretty safe. So but yes, with opioids, when there are so many acute cases, cancer cases की अगर हम बात करें जहां पर we need to give multiple sometimes analgesics or painkiller, with opioid also it's working synergistically, and it also reduces the adverse effects, and there is no serious adverse effect. In fact, not in chronic users. 10 15 साल की स्टडीज हुई हैं, लॉन्ग टर्म स्टडीज. सो देर इज नो क्रोनिक देर इज नो इशू इन द क्रोनिक केसेस एज वेल. लोग अगर लॉन्ग टर्म भी इसको पेशेंट्स ले रहे हैं, सो देर इज नो serious adverse effect or any side effect. So that we need to understand, and accordingly we need to maintain the duration, right? So that is a very important aspect which we have to convey to the patients also, because sometimes patients will also ask these kind of questions. Then again, if we talk about indication, all the severe chronic pain, neuropathic, musculoskeletal, muscle spasm, spasticity, neuropathic pain, fibromyalgia, any injury, any like accidental cases and all. Other indications I will not discuss today, but for pain, we any kind of pain you say, we can give medical cannabis. Now with this, the question will arise: how, what kind of dose, what kind of forms. So what I will do is I will quickly give a brief idea about all the forms available. But again, then Vikram will pitch in for some more detailed discussion on each product. But prior to that, I will give you a dosage idea in very brief, and then I will again come and we'll have a detailed discussion on all these products on each slide. But prior to that, I will ask Vikram to give you all a detail about his product. But so Vikram, you are there, I think, right? So as far as the tablet and capsule and tinctures are there, what we are doing is we are giving one capsule morning, evening generally. Otherwise, one capsule in night we are giving to start with, and in day morning we are giving 2 tablets of Trilokia Vijayavati. This is the standard dose of capsule or tablets. 2 BD. I should say that Trilokia Vijayavati should be given, and one OD or one BD, the capsules VJ75 we are using. Then same dose for I think you have pain capsules as well. So same dose for pain relief capsules also, as far as the Tiloki Vijayavati is concerned, because that is 25 mg. But for 75 mg, one morning, one evening is 5. For tinctures, the dosage is a bit tricky. So what I will do is let me keep a pause right now. Let Vikram just continue with the detailed discussion on the, and then I will add on the dosage part for the tinctures and the local application also. And there are very interesting findings with us for local application oil, कि हम किन किन ऑयल में उनको मिलाएं आयुर्वेदा में, तो हमें और अच्छा रिजल्ट कैसे मिल सकता है पेन मैनेजमेंट में. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 50% का ट्रीटमेंट का अगर आपने ये समझ लिया कि पेन मैनेजमेंट में आप लोकल एप्लीकेशंस की फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, तो आपको 50% तो वहीं से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और आपके टिपिकल आयुर्वेदा ऑयल्स की पोटेंसी भी डबल हो जाती है. वो भी हम समझेंगे क्विकली थोड़ा सा. Let's have Vikram first, and then we will continue with the discussion. And I also request all of you to add questions, and we want an interactive session now with all of you. I can see around 40 doctors right now on Zoom, and there were hundreds of doctors on YouTube as usual. So we need some interaction with all of you now. So please let's have an interaction and interactive discussion today with all of you, so that we can take it forward. Vikram, over to you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Piyush. I hope I'm audible properly. Yes, I would like to first thank all of the doctors who have taken out the time and to join us again for this session. I'm very glad that we are doing these detailed sessions on particular issues, and trying to understand that how this medicine can be given, in what form and in what dosage. I think most of the doctors even I have met, the whole issue comes around that how to use this medicine, and different potencies, and how to calculate the dosage in terms of different kind of patients with already existing problems or body weight, and questions like that.
I hope we will be able to answer these kind of questions. And I'm thanking Dr. Piyush once again for taking out time and getting this detailed information and spreading this around. So just to start with, I'll just give you a brief background. We guys have all three lines of hemp products. We have three main lines of hemp products. The one is the Ayurvedic medicine line, the nutritional line, which is made out of the hemp seeds, and we have a hemp seed oil infused cosmetic line. But sticking to today's topic, I'm talking about pain management. We have categorized these medicines, which I'm going to be taking you through. So first, obviously, is the classical formulation of Trilokia Vijayavati. This is made with the exact formulation which has been written in the books, which is 62.5 mg of dried hemp leaves and 62.5 mg of one lotion, and they're made into tablet formats of 125 mg each. So this is the first classical formulation which we have introduced, and going forward we'll be making some more cannabis-based classical formulations to have a bigger bouquet of the classical formulation. Dr. Next. Coming to the tinctures, this is our product. This is called Pain Free. This is one of the higher potencies which is available with us. So this basically has 1250 mg of 1250 mg of cannabinoids per 10 ml. So that means per ml it has 125 mg of cannabinoids. So this is a medicine which we are targeting for acute and chronic pain, and this can definitely be given for all the conditions Dr. Saab has been talking about. And going forward, we will be coming out with some more formulations which with different combinations and different potencies for other various issues. Dr. Saab, next. This is our local application products. So basically the cannabis-based medicines are categorized into two forms. One is the external application and one are the oral tinctures and the capsules. So these are three main oral external application products. In the first one is a muscle and joint pain, which is a 2% potency of the hemp extract and 98% of hemp seed oil. The second is a skin protect. It is a 1.5% potency of the hemp extract, and we have 98.5% of virgin coconut oil. So we made this variation for hemp seed oil and coconut oil, and which can be used for different applications. The third part is the cannabis hemp balm. This has been made and this has been used for indications like migraine and even in stuff like cold, cough, and headaches and everything. And this is a pretty well-reviewed product, and we hope that this takes care of some external issues. Dr. Saab, next slide. These are the capsules. So after being and speaking with doctors and getting a lot of feedback from the doctors, we decided to go into particular dosage, particular mg of capsules. So first we did a 25 mg of pain relief capsule, which is on the right side, and this capsule contains 25 mg of hemp extract, and it contains a balance of hemp seed powder. And these capsules have been developed so that if there is a patient or a doctor in which the dosage is getting a little tricky, and you want to particularly direct an exact amount of mg to a patient, so these capsules can be used in different forms, in morning, evenings, different combinations, to give an exact dosage to the patient. Similarly, we have the VJ75, which is a higher dose. It has 75 mg of hemp extract in this, and the rest is hemp seed powder. And this plays the same role. Of course, it's a more potent capsule. And going forward, in terms of capsules and tablets and tinctures, our company's vision and our company's the way we are working is to actually bring you the whole bouquet of hemp medicines in whatever formats it is available in the most cheapest price possible, so that every kind of doctor, in front, may it be classical, may it be external application, may it be tinctures, or may it be capsules, or other, going forward, we're coming out with roll-ons and different categories of products, so that as far as hemp medicines are concerned, we are able to serve the doctor in under just one umbrella.
And that is the idea of launching these many kind of products and bringing more and more variety to the doctors. Dr. Saab, next slide. Yes, these are the main products, and these products which we have shown you today is the part of our total offering. And these products work in pain management in different ways, like Dr. Saab was explaining. And now I'll give it back to him so that he can shed some more light on the dosage and the use of these products. I once again thank you all for joining, and I hope these sessions which we do every Saturday on different topics will bring you a complete knowledge in some time in terms of how to use cannabis in various formats. Thank you, Dr. Saab. Back to you. Right. Thanks, Vikram. Let's understand once more some medicines and see. Again, on one side, I request and in fact, again, thanks Ananta to have these sessions on regular basis, because everybody of us is an ecosystem. हमारा भी एक time है. You all know that we don't leave any कमीशंस एंड ऑल. आप लोग सब डायरेक्टली अनंता या किसी भी कंपनी के साथ डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, बेस्ट डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं. So and but why we are doing this, why we are putting our time, why, but what is our interest is to uplift this domain. And in that definitely we need companies like Ananta to support us in some scenarios, to have all this ecosystem to run, to pull our time and to do all this. Everything needs some kind of a funding and some kind of an ecosystem to be built up around. But we don't want to cut that from your pocket, which generally the people are doing. एक छोटा सा एग्जांपल देके समझते हैं. विजयावटी, त्रिलोकी विजयावटी मार्केट में यू सी दैट सो मेनी कंपनीज एंड ब्रांड्स. आप भी अगर कुछ खरीद रहे हैं तो 18 से 20 रुपए का टैबलेट मिलता है. बट नाउ अनंता इज दे हैव दिस टैबलेट विद 14 रुपीज. तो 4 से 5 रुपए तो आपको एक टैबलेट पे ही पहले से बच गए हैं एमआरपी पे. प्लस द डिस्काउंटिंग इज बेस्ट एज पर द इंडस्ट्री. देयर आर सर्टेन like incentives and all other wise. So I think the intention is not to just build up the profit or just seek money from all of you, from us and from the investors. The idea is to first of all ethically build up this domain. पैसा तो बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा अगर आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उसका इशू नहीं है. आप सब कमाएंगे एंड एवरीबडी विल ग्रो इन द इकोसिस्टम. बट आप कितना किसी को बेवकूफ बना सकते हैं या कब तक किसी के कमीशन से आप खेल सकते हैं, वो थोड़ा सा आई थिंक आयुर्वेद डॉक्टर्स को स्मार्ट बनना पड़ेगा. यही हमारी इंडियन वैद्यास प्लेटफॉर्म की हमेशा से रिक्वेस्ट, ऑब्जेक्टिव और एम रहता है कि वी शुड एम्पावर आयुर्वेद डॉक्टर्स, राइट. सो इन दैट नोट, त्रिलोकी विजयवटी इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल मेडिसिन ऑफ कैनाबिस. 2 बीडी जैसा मैंने बताया, डोसेज एटलीस्ट होना चाहिए. 1 बीडी का डोसेज से इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा नहीं आएगा. ये भी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन और रॉन्ग कम्युनिकेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने स्प्रेड किया है इंडस्ट्री में. 62.5 mg वंशलोचन एंड 62.5 mg विजया लीफ का पाउडर होता है इस टैबलेट के अंदर, राइट. सो अगर 2 बीडी की डोज से चलेंगे तो इफेक्ट भी अच्छा आएगा along with your ayurveda, whatever your ayurveda you are giving, and patients will also feel better. अगर 60-70 किलो या उससे ऊपर के पेशेंट्स हैं, अगर कोई बहुत ही कम पेशेंट वेट का है 40-50 केजीज तक का, तो वहां पर आप 1 बीडी या 1 टीडीएस भी दे सकते हैं एज पर द पेन कंडीशन, कि कितना एक्यूट या कितना टाइम से वो पेन है और क्या रीजंस है. अदरवाइज क्रोनिक पेन की अगर हम बात करें, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की बात करें, इंसोम्निया एंड एवरीवेयर यू कैन यूज दिस त्रिलोकी विजयावटी. इसमें 2 चीजें ध्यान रखना है. थोड़ा सा डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन माइल्ड लेवल पे कर सकता है, तो अगर क्रश करके हनी के साथ देंगे तो और अच्छा रिजल्ट हमें मिला है. यू कैन हैव त्रिफला और इसबगोल और माइल्ड लेग्जेटिव आल्सो अलोंग विद दिस, तो उसमें इशू नहीं आएगा पेशेंट्स को. एंड किसी भी कैनबिस की मेडिसिन में ध्यान रखें, सो दैट विल बी बेटर. एंड उसको पहले से अगर आप पेशेंट को बताएंगे तो दे विल बी फाइन. नाउ विद दिस टिंचर 1250 mg इन 10 ml, अगर हम डोज की बात करें तो generally we are starting with 4 to 6 drops in night at bedtime or 1.5 hour prior to bedtime. And in daytime we are either giving त्रिलोकी विजयावटी, या अगर टिंचर ही देना है तो 2 ड्रॉप्स आप मॉर्निंग में दे सकते हैं, 4 से 6 ड्रॉप्स आप इवनिंग में दे सकते हैं, 1-1.5 घंटा पहले उनका बेड टाइम जो सोने का टाइम है उससे. अंडर टंग सबलिंगुअल प्लेस करना होता है, वहां से ग्रेजुअली एब्जॉर्ब होता है एंड देन पेशेंट्स कैन हैव दैट. 40-50 तक का पेशेंट भी है तो उतना चलेगा. अगर 40-45 या उससे कम है पेशेंट
तो फिर आप उसको 3 या 4 ड्रॉप्स ही स्टार्ट करें, या 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मॉर्निंग में दें। उससे ज़्यादा में आप 2 या 4 ड्रॉप्स तक लेके जा सकते हैं मॉर्निंग, और रात का 6 to 8 ड्रॉप्स भी आ सकता है। 190 kg 100 kg तक का पेशेंट है तो 6 ड्रॉप या 8 ड्रॉप्स तक भी पिला जा सकता है स्टार्टिंग में। ग्रेजुअली थोड़ा सा इसको वॉच करना है, बात करनी है पेशेंट से। अगर आराम है तो उतने डोज पे कंटिन्यू रखें, कम आराम है तो 2 ड्रॉप्स और बढ़ा सकते हैं। ग्रेजुअली थोड़ा सा डायनामिक डोज, हर एक की बॉडी उसको अडेप्ट करने में टाइम लगाती है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्कस विद देम एंड हैव देम। आप उनको सबलिंगुअल बता सकते हैं, उनके किसी और मेडिसिन के साथ मिला के, हम महाराष्ट्र नदी क्वाथ कई बार देते हैं, उसमें मिला के दे देते हैं पेशेंट्स को, वो भी ठीक है। अगर सबलिंगुअल वो नहीं लेना पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उनकी मील्स में भी वो मिला के, उसको फूड में भी मिला के ले सकते हैं। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर विच यू कैन रिकमेंड। एक एक डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन और बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हमें मिली। सो ऑल दिस लोकल एप्लीकेशन ऑयल, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम मसल एंड जॉइंट पेन मैनेजमेंट ऑयल की आज बात करेंगे। सो इट्स एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑयल। अभी एक्यूट पेन के केस आ रहे हैं तो उसमें आप एक्सटर्नली इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। दे हैव दिस स्प्रे बॉटल, एक आपको प्रेस करना होगा थोड़ा सा, 2 या 3 बार में सफिशिएंट है एक टाइम के लिए अप्लाई करना। बट हमने क्या देखा कि वी हैव गिवन दैट दिस विद अदर आइज आयुर्वेदा ऑयल्स लाइक महाविश्व तेल के साथ हमने दिया एक्यूट पेन में, एक्सीलेंट इफेक्ट। महानारायण तो आप यूज कर ही रहे होंगे। निर्गुंडी ऑयल के साथ आप न्यूरोपैथिक पेन्स में इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन अगर मस्कुलर अगर वीकनेस है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें मस्कुलर डिफॉर्मिटी है, वीकनेस है या रिजिडिटी है मसल्स में, तो आप महामाश के साथ भी इसको यूज करके देखिए। दशमूल के साथ आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, दशमूल ऑयल के साथ। सो दीज आर फ्यू ऑयल्स इन विच वी हैव ब्लेंडेड दिस, वी हैव फोर्टिफाइड दिस। थोड़ा ऑयल आयुर्वेदिक वाला लिया, उसमें 2 या 3 बार इसको स्प्रे करके मिलाया, एंड वी आस्क्ड देम टू अप्लाई ऑन द अफेक्टेड एरिया, एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड 1 महीने के हिसाब से वो आराम से पूरा उनका चला भी जाता है बॉटल, एंड वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू द ओनली आयुर्वेदा ऑयल्स। सो वो भी एक ऑप्शन है। ओनली एक्सटर्नल ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता ही है। थोड़ा सा कॉस्ट का इशू आता है, तो इसीलिए वी हैव स्टार्टेड दिस मेथड कि आप जो आयुर्वेदा ऑयल्स हैं उसके साथ इनका एक बॉटल देके 1 मंथ के हिसाब से आस्क देम टू अप्लाई। विद इन 1 मंथ पेशेंट्स आर कमिंग दैट generally 50 to 60%, 70% relief is there in whatever the problem they are having. So वो हमने अभी काफी करीब 1-2 महीने से इसको करना शुरू करा, and we have seen this very good result of fortification, I repeat, in typical Ayurveda oils when you do। एंड आप ब्लेंडेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, अगर आपके सेंटर्स हैं, आपके पंचकर्मा सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स या थेरेपी सेंटर्स है, आप पेशेंट्स को देना चाहते हैं तो अपनी पैकेजिंग में भी दे सकते हैं। So all these things are there, and I again thank, there are some questions in my inbox and in Zoom chat also. Just give us few minutes, then we'll be starting discussing all these questions as well with all of you. balm भी again local apply आप करा सकते हैं। कैप्सूल्स का जैसे मैंने बताया, 1 in night you can start either at bed time or 1.5 hour prior to bed time। अगर स्लीप का इशू है तो 1.5 hour prior to bed time दे, स्लीप भी अच्छी आएगी और पेन में भी रिलीफ मिलेगा। अगर खाली पेन का प्रॉब्लम है तो बेड टाइम भी दे सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन है, मॉर्निंग में भी एक डोज कुछ टाइम बाद स्टार्ट करा सकते हैं। थोड़ा सा ड्राउजीनेस या स्लीपी इशू रहेगा अगर मॉर्निंग में फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे VJ75 को। आप ये भी कर सकते हैं कि नाइट में VJ75 दें, मॉर्निंग में 2 त्रिलोक्य विजयावटी या 2 पेन रिलीफ कैप्सूल्स जो राइट साइड में इधर मेंशन है, इनमें से कुछ भी आप उनको दे सकते हैं मॉर्निंग डोज में। एंड नाइट डोज में आप VJ75 स्टार्ट करें एक्यूट पेन में। We have seen very good results, patients were taking so many allopathic medicines, painkillers, steroids and all, सब कुछ बंद हो गया gradually, and with Ayurveda and with cannabis we are able to manage their any kind of pain, any kind of acute, any level, highest level of pain, you can say that we have used that, right? So this we have seen, and first time I think they have launched that extract capsules with 75 mg potency, which is one of the highest potency right now in our country, and with 425 mg of hemp seed powder, the extract is there. So I think this is a very good product, and we are using in our clinics, and we are getting very good response as far as, and वो डोज वाला भी इशू रिजॉल्व हो जाता है। पेशेंट्स को भी 10-10 की कैप्सूल्स का ब्लिस्टर पैकिंग है तो कॉस्टिंग भी काफी इफेक्टिव हो जाता है ट्रीटमेंट देने के लिए। एंड you can give for 10 days or 15 days also initially, and then patient will come back to you and they will report that this kind of relief and this kind of like healing is there in their case.
So all these things are there with these kind of medicines. Then pain relief capsule again in 25 mg, the capsules are there. So one morning evening या 2 bd से भी start कर सकते हैं depending on the acuteness of the pain, and then accordingly you can reduce the dose also. And I repeat, all with all these your Ayurveda treatments, your standoff care, Ayurveda medicines, panchkarma, uh, अग्निकर्मा, मर्म चिकित्सा, वो सब कंटिन्यू रहेगा। एंड उसके साथ आप इसको दीजिए तो you will get very good results. Stand alone भी कई बार you can give and you can see that results are there, right? So वो depend करेगा केस टू केस बेसिस पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, तो डेफिनेटली सबका अलग अलग गुगलू जा रहा है, साथ में ये भी जा रहा है, ऑयल्स भी जा रहे हैं, एंड यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स विद 2 3 4 मेडिसिन मैक्सिमम इन योर प्रिस्क्रिप्शंस। आप कैनबिस को अगर ऐड करते हैं तो आराम से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक आपको पेशेंट्स की तरफ से आता है, एंड they continue with you and they have faith in your treatments. So that is the potency and that is the value which medical cannabis is creating in the prescriptions of all the Ayurveda doctors, which we need to understand. I think some questions are also there. Let me just quickly take up those questions and be open this discussion to forum now. All of you can participate. Any one of you want to ask any question verbally, you can raise your hand. We will allow you to स्पीक, एंड आप में से कोई शेयर करना चाह रहे हैं फीडबैक तो फीडबैक शेयर कर सकते हैं. लेट्स हैव अनदर 10-15 minutes of an interaction today, so that we can have a discussion and have better understanding from all of you. Just give me a second, Dr. Rizvi, I will come to you. Let me just take some questions first. Does it come under narcotics? No, it does not come under narcotics, because the leaf medicines, the leaf extract is out of the purview of narcotics as far as leaves and seeds are concerned. So leaves and seeds are not under NDPS Act. It is exception there, and it does not have any kind of habit formation or dependence. Your second question, Dr. Goyal. First is no, it does not come under narcotics, because the medicines which you are talking about is of leaf extract. Second is it does not have any kind of a dependency or any kind of an habit formation, because again that will be due to the very high levels of THC which is available in the bud or resin. वो recreational में चला जाएगा, and that is not right now allowed in India. So we are not having that in our medicines or products. So the next question is Dr. Sharma, Premista Sharma, how long we should continue cannabis tincture without any harm? We can continue for years, Dr. Sharma. There is no harm, and there are long-term studies which are which have proven that we can have for 10 years, 15 years as well. Right, so long term administration can be done. बस में ये ध्यान रखना होता है कि after 2-3 months we should have a gap of couple of weeks to again restart. maybe 15 दिन या 20 दिन का आप गैप दीजिए, फिर से दोबारा स्टार्ट करें, तो वो थोड़ा सा बॉडी एक इसको बोलेंगे कि एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ साथ एक ऐसे लेवल्स पे आ जाती है जहाँ सेचुरेशन हो जाता है कई बार एक पर्टिकुलर डोज। तो आप उसको थोड़ा सा गैप या थोड़ा सा ऐसे मॉड्यूलेशन के साथ अगर प्रैक्टिस में रखेंगे तो इट विल गिव यू ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द पेशेंट्स। तो थोड़ा सा पेशेंट्स को समझाएं। एंड कई बार हम भी क्या करते हैं 2-3 महीने में थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं, एंड देन अगेन, एंड बाय द वे व्हेन यू हैव मल्टीपल डोसेज फॉर्म्स, लाइक आपने कैप्सूल या टैबलेट से स्टार्ट किया, फिर उनको टिंचर्स पे लाए, फिर चेंज करा, तो उसमें थोड़ा सा गैप लेके अगर आप ऐसे करते रहेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, तो that can be one more option which you can have with your patients. Can we use in CKD patient for pain management, Dr. Keyur Dudhat? Right, we can use in CKD patients as well, but again we need to observe their KFT values and their parameters, and along with that we can also have some Ayurveda medicines which will help them in healing their CKD. But yes, we can use that in CKD patients as well. uh, there is no issue, and there is no, till now there is no data which will say that it will damage the kidney more, so it's pretty safe and we can use that. In fact, to any organ there is no data. In fact, it will heal that particular organ as well. We have given in CKD patients many times, and we have seen healing for CKD also has been accelerated along with the pain management issues, because as we need to understand that it is working on the cellular level, and आयुर्वेद में भी cannabis को योग वाही भी बताया गया है,
means it will be acting as a catalyst, and it will be ensuring that whatever the medicines and whatever the treatment you are giving to the patients for CKD, उसका भी result आपको better और escalated way में मिलेगा along with the cannabis, right? So Dr. Rizvi wants to say that he's already tied up with Ananta, but want to understand when the medicines will reach. Okay, no problem. So what I will ask is, I will convey your message to Ananta team, Dr. Rizvi, and I have replied to him, Dr. Saab. They're already dispatched, so it should reach him in any 2 minutes. Great. And Dr. Goyal, you want to ask something? So maybe you can ask, right? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे वेबिनार के लिए। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे भी आपने बताया कि जो विजया से बनी हुई हमारी मेडिसिन हैं वो नारकोटिक्स के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन अगर हमें डर रहता है कि कोई कंप्लेंट होती है या हम रेड होते हैं, तो हम क्या उनको कोई ऐसा दिखा सकते हैं एविडेंस जिसमें कि जो भांग के पत्रों से बनी हुई दवाई है वो उसमें कवर नहीं होती है और हम उससे प्रोटेक्शन रहेगी, एक भाव रहता है हमारे अंदर। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका डॉक्टर साहब, एंड आई अगेन अप्रिशिएट यू। तो क्या करेंगे कि आप ना, लाइक, लेट मी जस्ट शेयर माय मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी हियर, एंड इनफैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस सेशन, एक मेरी रिक्वेस्ट अनंता से भी रहेगी। विक्रम, आप नोट डाउन कर लें, आपके पास भी सारा डेटा आएगा सारे डॉक्टर्स का। तो क्या कर सकते हैं कि एनडीपीएस एक्ट, वैसे डॉक्टर साहब सिंपल है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ इनफैक्ट सारे ऑडियंस को यहाँ पे। एंड अदरवाइज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दिया है मैंने अपना पर्सनल, और अनंता से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे डॉक्टर्स को ईमेल जरूर करें अलग से। एक तो आपको थैंक यू ईमेल और फीडबैक आएगा, बट अलग से विक्रम आप नोट कर ले कि एनडीपीएस एक्ट का वो पेज, वो सेक्शन जहाँ पर ये मेंशन है कि लीव्स एक्सक्लूडेड होते हैं, वो जरूर आप सारे डॉक्टर से शेयर करें आफ्टर दिस मीटिंग। एंड डॉक्टर गोयल, इसमें हमें समझना है कि कभी भी अगर आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं और कोई भी नार्कोटिक्स एक्साइज या कहीं से भी आता है एंड आपको उसके बारे में कोई भी पता चलता है, परेशानी होती है, तो पहली चीज तो अगर वो आप लेबल्ड एक मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है आपको उन मेडिसिन का, जैसे फॉर एग्जांपल अनंता के आप अप्रूवल्स चेक कर सकते हैं, they have all the lab reports, they have all the approvals of their medicines and products, तो वो आप चेक कर सकते हैं, वो सारा अवेलेबल है, लेबल पे सब कुछ मेंशन रहता है। So first thing is, whatever the medicines which we are using are already being approved by the government of India, the state Ayush body. Right. Second is, we can say we can always say to them that in NDPS Act, सी अगर कोई नारकोटिक्स का ऑफिसर है उसको एनडीपीएस एक्ट ऑलरेडी पता है, हम काफी ऑफिसर से डील करते हैं एंड दे नो अबाउट दिस कि यस डॉक्टर साहब हमें पता है कि जो सीड्स हैं या जो लीफ हैं वो उसके अंदर नहीं आते, जो इसका फ्लावरिंग टॉप होता है जिससे गांजा या चरस या वो मेडिसिन, मतलब वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो इशू है। That is technically a drug right now. Till that time, it will not being approved as recreational in our country. So वहां पर इशू है। So अगर आपके पास एक रॉ फॉर्म में ऐसा कुछ मिलता है तो वहां पर आपको इशू आ सकता है। बट अगर आपके पास पैक्ड फॉर्म में एक मेडिसिन, जैसे कि डॉक्टर्स ने हमसे पूछा कि हम वैसे भांग रख सकते हैं, भांग के पत्ते रख सकते हैं क्लिनिक पे, या हम रॉ मटेरियल से दवाई बनाना चाहें, वो नहीं है अलाउड। वो आपको उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है और आपको एक कोटा लेना पड़ता है किसी भी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए। तो अगर आपको भी करना है तो आप पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लें, उस कोटे का एक्साइज आपको वो अलॉट करेगा एंड तब आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर या आयुर्वेदा मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, तो वो प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। बट एज ए क्लिनिक लेवल पर आप क्लिनिशियन हैं तो वहां पर आपको रॉ मटेरियल का इशू है, बट पैक्ड मेडिसिन अगर आप रख रहे हैं विद अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग इन प्लेस तो वो कोई इशू नहीं आएगा। एनडीपीएस एक्ट में पहली बात जैसे मैंने बताया लीव्स वाली मेडिसिन एक्सक्लूडेड हैं, दैट यू कैन कन्वे टू देम। एंड उसके बाद भी सी रहता क्या इशू है, जैसे अभी हमने एक और इंसिडेंट शेयर किया था लास्ट टॉक में, दोबारा आज उसको 2 मिनट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपने पॉइंट उठाया। तो अफीम या ओपियम में भी इश्यूज हैं और अफीम से भी आयुर्वेद में काफी दवाइयां बनती हैं, हमें पता ही है, कामनी विद्यमान रस है और काफी सारी दवाइयां हैं ऐसी जो ओपियम या अफीम उसके अंदर डलता है। फिर भी अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स सारे सर्जन यूज करते हैं, सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स यूज करते हैं। आपके पास उसका डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने किससे परचेज किया, पेशेंट को आपने दिया। अगर आप बिल्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं तो आप बिल्स मेंटेन करें।
अगर आप अभी उसके परव्यू में नहीं आते हैं तो आप एटलीस्ट कुछ डेटा, कोई रजिस्टर, कोई डायरी मेंटेन करें, बिकॉज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का भी ये रूल है कि आपको क्लिनिक में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। अब बाय द वे, अब वो नहीं है कि आपने किसी को दे दिया और आपने उसका या तो प्रिस्क्रिप्शन, आइडियली आप प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं या फिर रजिस्टर में डेटा एंट्री में कहीं नोट कर सकते हैं। वो जरूरी है, वो इकोसिस्टम, वो मैनेजमेंट हम सबके लिए जरूरी है एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए क्लिनिशियन। एंड वही रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी है कि चाहे आप ओपियम, कैनाबिस, किसी भी मेडिसिन से डील कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड है, आपके पास सेल परचेज का रिकॉर्ड है, एटलीस्ट परचेज का रिकॉर्ड है, सेल का नहीं भी है और रजिस्टर में भी एंट्री है, तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बीइंग ए डॉक्टर। बट एटलीस्ट देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एंड प्रोडक्ट्स जितने हों सारे पैक्ड हों, लेबल्ड हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एज ए क्लिनिशियन, एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप उसको कंप्लीटली लीगल फ्रेमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं है, राइट? So I think that was the answer, and yes, some doctors have asked about that can this be used in the स्थानिक वस्ती। तो स्थानिक वस्ती में हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कटी वस्ती है, जानू वस्ती है, आप यूज कर सकते हैं। ग्रीवा वस्ती है, इन सब में इस ऑयल को यूज किया जा सकता है। जो हमने बताया, फोर्टिफिकेशन के साथ हम ऑयल्स को मिला के अप्लाई करने को बोल रहे हैं पेशेंट्स को। एंड एज वी हैव ओपीडी क्लिनिक इन वन सेटिंग, इन अदर सेटिंग वी हैव पंचकर्मा एज वेल। तो हमने दोनों रिजल्ट्स देखे। हमने स्थानिक बस्तियों में भी इसको ऐड कराना शुरू करा और रिसेंटली, एंड वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आप ज़रूर इसको इंश्योर कराएं, इनको पेशेंट्स को बोलें। एंड पोर्टली भी साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। पोर्टली से बेसिकली एब्जॉर्प्शन सबक्यूटेनियस से डर्मल और लोकल लेवल पर काफ़ी अच्छा एब्जॉर्प्शन उसका एनहेंस होता है, दैट वी हैव सीन, राइट? सो आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस एंड एग्जॉस्टिव सेशन टुडे, around 1 hour now we have spent together, and the idea was to clarify. अभी भी आपको कोई confusion है regarding dosage, you can connect with Ananta team, you can connect with us, we'll be happy to help you, support you in the dosage. बट मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। अब आई थिंक कहीं ना कहीं फिर भी काफ़ी डॉक्टर्स अभी कंफ्यूज हैं, शायद डर रहे हैं, शायद आई डोंट नो। हमारा टारगेट है कि हम ऑल ओवर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदा डॉक्टर्स को मेडिकल कैनबिस के बारे में बताएं और उनको इंश्योर करें कि वो प्रैक्टिस शुरू करें। अब तो टैबलेट कैप्सूल इस फॉर्म में मेडिसिन हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल मेडिसिन हैं, जो ऑलरेडी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसी के कॉस्ट की इक्वल मेडिसिन हैं। हमने स्वर्ण औषधियाँ, स्वर्ण के साथ गुगलू के मिक्सचर्स की कुछ मेडिसिन कंपनीज की देखी है, उनसे भी सस्ती मेडिसिन आपको यहाँ पे टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में मिल रही हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि अब इतना इतना कोई इशू आपको आना चाहिए इन मेडिसिन को यूज करने में। एंड द मोर यू विल यूज दिस मेडिसिन, द बेटर results your patients will convey to you, and ultimately you will grow as a clinician, as an Ayurveda doctor, and that is only our aim of doing all these sessions. So we will be coming back with the another informative session, and hope this session was useful for all of you. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फीडबैक जरूर दें। हमारा पेज फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, अनंता से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर मेल में लिंक्स शेयर करें। अनंता के प्लेटफॉर्म पे जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। सो फीडबैक ज़रूर दें इन सेशंस का, ईमेल ज़रूर करें हमें। कोई टॉपिक स्पेसिफिकली यू वांट टू डिस्कस एंड यू वांट टू हैव मोर नॉलेज, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। We'll be happy to help you in that as well. And on that note, I again thanks Mr. Vikram Veer Singh from Ananta Hemp to be us to join us in this session, and to ensure that these kind of sessions we can do on regular basis. Vikram, any concluding final remarks from your end? Thank you. No, thank you, Dr. Saab. Thank you so much for the time, and I again thank all the doctors who've been listening to us. And we'll be doing these sessions every Saturday. We'll be picking up different topics, different indications, and just our effort is, and our idea is that we can download maximum knowledge and try to answer all the questions at the doctor level. And I really thank Dr. Piyush who's been able to gather this exhaustive information and who's been able to download this information to all of you. And we as a company really hope that we are able to provide you with the best medicines and the right variety of it, so that you are able to do the medical cannabis practice in its right form.
Thank you once again for joining us, and I hope to see all of you again on next Saturday. We'll be sending you the information very soon, and with the email. If any one of you have missed the session or joined late, we'll be sending you the YouTube link also for all these sessions. They're all available on the Indian Vedya's YouTube channel, and soon will be available on our YouTube channel too. And I hope that with the coming sessions, we're able to cater to maximum number of questions and maximum queries. Thank you, Dr. Saab. Thank you once again for putting this effort. And we're really glad that we're associated with you at this level and we're able to do this. Thanks. And thanks all the doctors for joining. You can just quickly either share your numbers and details as well if you want. By the way, I just forget that any one of you want samples. So Ananta is very much happy to help you with the sample so that you can try these products and get a feel on your patients, and then you can maybe connect with them as well. So any doctor wants to. I've shared my personal number also and my email also. Any doctor who wants, like Dr. Saab said, please feel free to just get in touch with me on WhatsApp or email, or just give me a call, however you feel comfortable. Yeah, so I think you can just quickly post your number and email ID on the Zoom chat also right now, so that any doctor wants to connect with you, they can like connect with you directly, Vikram, and that can help them to take the samples and take the association with your company in future as well. And again, I thanks all the doctors. I think so many doctors are already watching us live on YouTube also. And again, I thanks many doctors have shared their contact details also. So as Vikram said, we will try to have on weekly basis these sessions, and all the sessions will be there on the YouTube channel of Indian Vaidya. So if you miss anything initially, you can just go back and check the entire session on YouTube channel of Indian Vaidyas as well. And thank you again. Have a nice weekend ahead, and see you next week as well. Thank you.